Yes. And what we did in it? and we made seaweed. We made a CV. Okay. Ayat, do you remember? We did assignment. Okay, that's right. All right. So today we are also doing Word, but we are doing something new. Murtaza, I gave an assignment. Remember? Did you do it? Miss, actually, I did it, but I wasn't able to fully do it, complete it because we were mostly out, and I just a little. Uh, I just joined the class Okay. before Yeah. I was No, no doing problem. it assignment. No problem. We will do that assignment tomorrow along with Kiran. We will do it in the class. Okay. 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 Today we are going to be doing some of the stuff क्योंकि उसके अंदर कुछ pictures वगैरह सब included थी ना. So now we will see how we can put that all in, and then we will be doing the assignment later. Okay. So tell me if you guys can see my screen. We can see your Yes, you screen. can see it, please. Okay. I can see your screen. Okay. Your voice is a little bit echoing. Everyone's voice is echoing. Okay. Now is it clear? Yes, now it's clear. Yes. All right. Can you see my screen now? Yeah, you can. Okay. So I have put this on recording. All right. So yesterday we finished this first tab of our home, like till here. Okay, and it was pretty easy. अब हमारे पास just ये वाला part बाकी है, and now today we are moving on to our insert tab, where we will be learning all about pictures and stuff and how we can put that on. But before we start that, I have a little assignment for you guys to do. Hmm. Okay, you guys will be creating this assignment after we learn the tab today. Or can you guys create it right now? Do you know how to create this? No. No? Okay, so I will tell you guys how you can do it. Yes. Um, I'm just finding some assignment that you guys can do right now. Okay, you will also be able to do it after today's class. All right, but before we get started, can you go ahead and do the type rush because I haven't seen your speeds. I'm going to send you the link of the type rush. Murtaza, have you practiced? Yes, I practiced time brush a little bit. Okay. I've sent you the link over here in the chat box. Try and put your fingers according to what I taught you. Okay, I'm going to show that on the screen as well and start doing it. And then afterwards, we can start our word. Okay, Yes. there we go. It's on the screen. All right, go ahead, do it. When you're done, let me know your speeds.
I'm done. Done. Hello. Murtaza, when you're done, let me know. Miss done. Okay, Murtaza, what was your speed? It was 40 hundred. It was. It is. It is 14.1 words per minute. That is amazing. Good. That's the spirit. Alright, so now let's properly get on to our topic. Hmm. ये एंड में मैं वापस कराऊंगी था क्या Okay. All right. So let's get started. Now we're going to start our word tab. Okay. My voice is clear, right, Murtaza? Yes, it's clear. Okay. So over here. So here yesterday we completed till the tab till here ना. अब आज हम ये वाले position पे आते हैं. First let me increase the size and let me write my name. Okay. Now, if you see over here, this option, I'm going to zoom in a little bit. Yeah. So if you see over here, we have this option over here. जिसमें कुछ लाइंस बनी हुई हैं एंड लेफ्ट एरो बना हुआ है एंड जिसमें कुछ और लाइंस बनी हुई हैं और जिसमें राइट एरो बना हुआ है इफ आई पुट माई माउस ऑन दिस इट टेल्स मी इसका नेम है डिक्रीज इंडेंट मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन और ये वाला जो है इट्स द इंक्रीज इंडेंट मूव योर पैराग्राफ फार्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन सो ये बेसिकली इन दोनों का नेम इंडेंट है ये डिक्रीज करता है ये इंक्रीज करता है अब ये किस तरह वर्क करता है लेट मी ट्राई इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस इट्स नॉट वर्किंग इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस इट्स गिविंग मोर स्पेस ऑन दिस साइड ओके ये तब वर्क करेगा जब यहाँ पर साइड पे स्पेस होगा अब मैं अगर इसको क्लिक करूँगी तो ये डिक्रीज कर रहा है ये इंक्रीज कर रहा है सी इट दिस इज बेसिकली कॉल्ड इंडेंट
यही सेम काम मैं अपने जो कीबोर्ड पर मेरे पास एक ऑप्शन है ना टैब का, जो हमने कल यूज़ किया था TAB, अगर मैं उसको भी प्रेस करूँगी ना ये तब भी वर्क करेगा। सी मर्तज़ा, यू रिमेंबर टैब किसको बोलता? Yes. तो अगर मैं टैब प्रेस करूँगी तो ये टैब से भी आगे जाएगा, और अगर मैं ये टैब की जगह अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट का यूज़ करूँगी तो वो भी सेम काम करेगा। ये हम क्यों करते हैं वैसे, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी अगर जब हम न्यू चीज़ें क्रिएट करेंगे ना तो उसके अंदर टैब का ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट का काम होगा। वरना अगर मुझे इस ईमान को मिडिल में लाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके मिडिल अलाइनमेंट से ला सकती हूँ। ओके, यस, एनी क्वेश्चंस? यस, यू हैव द क्वेश्चन। Teacher, if you move left and right, so it means it's a game. If it's a ball, so we move it left and right, and we have to cut the apple. Yes. Okay. So, all right. So this was our alignment and increase and decrease in end. Murtaza, any questions over here? No. Okay. अच्छा, after this we have this option. For example, मैंने यहाँ पर लिखा ईमान अब्दुल रहीम like this. Okay, मैंने 3 different line लिखा. Murtaza, do you know next line पे कैसे जाता है? मुझे अगर इसके नीचे वाली लाइन पे जाना है, Yes, you have to press enter. एंटर, गुड। तो अब मैंने ये एंटर करके 3 लाइन्स में लिख दिया, सही। नाउ आई हैव 3 लाइन्स ओवर हियर। लेकिन अब ये लाइन के जो बीच के अंदर स्पेस आ रहा है ना, ये जो वाइट स्पेस ईमान और अब्दुल के बीच में जो स्पेस है, और ये अब्दुल और रहीम के बीच में जो स्पेस है, हाउ डू आई इंक्रीज और डिक्रीज इट? आई विल सेलेक्ट इट, ओके। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है, इफ़ यू सी दिस ऑप्शन, इंडेंट के बिल्कुल नीचे वाला, ओके। इफ़ आई क्लिक ऑन इट तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। अब ये क्या काम करेगा? इफ़ आई क्लिक ऑन 1.0 तो ये नॉर्मल वाली हाइट दे देगा, 1.15 थोड़ी सी बढ़ा रहा है, 1.5 और बढ़ा रहा है, तो ये लाइन के बीच का स्पेस बढ़ा है। डिड यू सी? So if you want to increase the size between the lines, you can also use this. It's called line height. Alright? ये आगे जाके सारी चीज़ें अभी यूज़ होने वाली हैं असाइनमेंट्स में, तो you can keep note of it. Okay? Now if I want to color this, Iman Abdul Rahim, I can select it. यहाँ पर एक paint bucket का option है, this one. Okay? I'm going to click it. और अब मैंने इसको for example black color कर दिया. See? It has a black color now. तो ये काम हम जो है हाईलाइट के साथ भी कर सकते थे, लेकिन अगर मुझे बैकग्राउंड पे कलर करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, आफ्टरवर्ड्स नाउ देयर इज अनदर थिंग। ये तो बिल्कुल सिंपल वाला ऑप्शन था। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है बॉर्डर्स का, दीज। नाउ हाउ कैन वी यूज द बॉर्डर्स? फॉर एग्जांपल आई राइट Murtaza's name for example. ओके, ना आई वांट कि जो मुर्तज़ा का नेम आ रहा है इसके अराउंड बॉर्डर्स आ रहे हो, मतलब एक बॉर्डर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर ये नेम आ रहा हो, तो मैं मुर्तज़ा को सेलेक्ट करूँगी, ओके। एंड यहाँ पर जो मेरे पास ऑप्शन है ना इस तरह का, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके बराबर वाला, ये दिस वन, ओके, इसको बोलते हैं बॉर्डर्स। अब मैं इसके एरो में जा रही हूँ, सो इट्स टेलिंग मी बॉटम बॉर्डर। सी, अब मैं बॉटम बॉर्डर पे माउस रख रही हूँ तो ये मुर्तज़ा के नीचे एक बॉर्डर बना रहा है, टॉप बॉर्डर मुर्तज़ा के ऊपर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर मतलब कोई भी बॉर्डर नहीं आएगी, ऑल बॉर्डर मतलब मुर्तज़ा के बिल्कुल अराउंड इसने बॉर्डर बना दी, इफ़ यू से, ओके। देन यहाँ नीचे है आउटसाइड बॉर्डर्स, जो अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ हमने डिफाइन नहीं किया। इनसाइड बॉर्डर्स, इसके इनसाइड बॉर्डर्स जो देखो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ओके। So this is how we can put up borders for us. Now another thing, अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन है बॉर्डर्स एंड शेडिंग का, इसी लाइन के अंदर बॉर्डर्स एंड शेडिंग का ऑप्शन है। इफ़ आई क्लिक ऑन इट, मैं ये जो बॉर्डर्स मैंने क्रिएट किए ना, मैं इसको थोड़ा डार्क कर सकती हूँ। तो यहाँ विड्थ लिखी हुई आ रही है। इफ़ आई इंक्रीज द विड्थ फॉर एग्जांपल 4.5 एंड आई प्रेस ओके, एंड देन अगेन मैं बॉर्डर्स के ऑप्शन में आऊँगी एंड आई विल क्लिक ऑन द आउटसाइड, आई विल क्लिक ऑन द ऑल बॉर्डर्स, तो अब वो उस बॉर्डर को थिक कर देगा। नाउ अगेन आई गो इन द बॉर्डर्स एंड शेडिंग, एंड अब मैं इसका कलर जो है इसको ब्लू कर देती हूँ, आई प्रेस ओके। अब मैं अगेन एरो में आती हूँ और मैंने क्लिक किया ऑल बॉर्डर्स पे, तो अब इसने उस बॉर्डर को ब्लू कर दिया।
Murtaza, are you getting it? Yes. Yeah. And Miss, can I go to the washroom? Yes, go. Alright, so ये border वाला part clear है Murtaza, Ayat and Jannat? Yes. Yes. Murtaza, is this clear? Yes. Okay. So, अच्छा ये borders it should be cleared. If इसमें कोई questions है तो do ask me क्योंकि we have a lot of assignments of borders after this. Okay. यहाँ border Okay. shading के अंदर जो है ना kindly mute your mics. यहाँ पर borders and shadings के अंदर 3D borders भी हैं custom borders भी हैं. Custom में अगर हम जाएंगे ना so we can choose whatever kind of border we want. Page border भी होती हैं, shadings भी होती हैं, but we will see how these work. Okay. So we will discuss that ahead in the class, but this was the basic part. अच्छा after this we have some of these. अब ये क्या काम कर रहे हैं ये जो इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ ये जो different titles यहाँ पर नजर आ रहे हैं आयत the ones that you were asking me about before इसके एरो में अगर हम जाते हैं तो यहाँ different kinds of titles आ रहे हैं ये ऑलरेडी बने बनाए हमारे लिए टाइटल्स इन्होंने दिए हुए सो इफ़ वी डोंट वांट टू कस्टमाइज इफ वी वांट लाइक एन ऑलरेडी मेड टाइटल तो हम यहाँ से जो है इसकी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं सी so it created this for ourselves okay so we can also use these any questions in this No. अच्छा अब मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर ओके दिस टेक्स्ट अब इसके अंदर मैं यहाँ बीच बीच में जो है ना अपना नेम डाल देती हूँ यहाँ पर भी डाल दिया यहाँ पर भी डाल दिया ओके अब मैंने यहाँ बीच बीच में हर जगह अपना नेम है ना यहाँ पर परटेन कर दिया नाउ व्हाट आई वांट दिस टू डू कि आई वांट वर्ड कि अब ये मुझे फाइंड करके दे कि कहाँ कहाँ ईमान लिखा हुआ है क्योंकि मैंने कहा कि ईमान जो लिखा हुआ है ना उसकी जगह मुझे लिखना था आयत तो अब वो मुझे सारे ईमान ढूंढने तो अब मैं क्या करूँगी मैं एक एक करके जाके उसको ढूंढूंगी कि ओह दिस इज ईमान देन आई विल चेंज इट टू आयत राइट बट देयर इज अ मच ईजियर वर्जन ऑफ दिस व्हाट कैन आई डू यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर है होम टैब के अंदर ही है बिल्कुल राइट साइड पे फाइंड एंड रिप्लेस ओके अभी फाइंड एंड रिप्लेस क्या काम कर रहा है फाइंड हमें ओनली वो वर्ड फाइंड करके देगा फिर क्लिक ऑन फाइंड यहाँ पर इससे मुझे एक ऑप्शन बना दिया ओके नेविगेशन में नाउ आई विल टाइप हियर ईमान आई प्रेस एंटर एंड सी इससे मुझे हर जगह ईमान हाईलाइट करके दे दिया कि भाई यहाँ 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 अपने ईमान लिखा हुआ है ओके लेकिन अब मुझे इसको आयत में चेंज करना है तो वो मुझे खुद से जाके करना पड़ेगा that there is another option of it. I will cross this. यहाँ पर एक ऑप्शन है replace का. If you see under find यहाँ replace लिखा हुआ है. If I click on replace, मैंने यहाँ लिखा ईमान, find करना है और replace करना है आयत. ओके और मैंने क्लिक किया replace all. मैं जैसे ही replace all करूँगी ना तो ये सारे के सारे ईमान को मिटा के आयत कर देगा. I replace all. See it said we made 6 replacements. अब मैं इसको ओके करती हूँ एंड लेट सी कि इसने कहाँ कहाँ आयत किया सी जहाँ जहाँ ईमान था ना इसने वहाँ वहाँ आयत लिख दिया ओके सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द फाइंड एंड रिप्लेस आयत मुर्तजा एंड जन्नत इज दिस क्लियर Yes. okay Yes. all right so this was it and then let's give you one assignment and then we will move on to the next one now let me give you this will you be able to do this now Murtaza? Yes. Will you be able to make this now? Okay. Yes. Are you sure? How will you make the lines? I will do the borders. Okay. So I am giving you 10 minutes. We will meet at 3:40. Try go ahead and create this, okay?
And when you're done, let me know. Alright, Murtaza? Okay. Ayat and Janet, you guys also go ahead and create this. Open your Word and start creating this.
Miss? Miss? Yes, now I can hear you. I was asking that how do I make my border short because it's too long? Okay. And I can't get it. I mean that it's a border, so is it is under the word, not like in this. It, it's a and it's under the word.
Wait. I'm just making the borders. Okay, you're done. Can I share my screen? Okay. Yes. No, almost. Yes. Where? A mile check.
You try to keep. Yes, I have it. Yes. Yes. You can there's a arrow button. You can press it and go down. Yes.
Yes. ओके सो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन के अलावा जितने भी ऑप्शन है, सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस सेकंड ऑप्शन. ओके, ये वाला. If I click on this, now I will be able to move this picture wherever I want. See, now I'm able to move it. I can decrease the size, I can move the image wherever I want. So if I want to move any image here and there, so I can simply do it by this option and I can go in the first option. Okay. अच्छा, another thing, in सब में difference क्या है, ये जो सारे options हैं. इफ़ आई पुट दिस इमेज बिटवीन द टेक्स्ट, मैंने इसको टेक्स्ट के बीच में डाल दिया, तो अब ये क्या कर रहा है, ये इमेज जो है ना, ये बीच में आ गई है और जितना भी टेक्स्ट है ना उसके साइड पे अलाइन हो गया. कैन यू सी इट? जितना भी टेक्स्ट है उसके साइड्स पे आ गया, उसके अराउंड आ गया. इफ़ आई अगेन गो टू दिस ऑप्शन एंड आई प्रेस दिस सेकेंड वन टाइट, तो ये क्या कर रहा है, ये स्टिल इसने जितना भी टेक्स्ट है ना अपने अराउंड रखा हुआ है. देन आई कैन गो टू दिस थर्ड ऑप्शन. इसने भी इतना कोई चेंज नहीं किया, बट व्हेन आई गो टू दिस वन, टॉप एंड बॉटम, दिस वन, सो अब क्या हो रहा है मर्तज़ा, कैन यू टेल मी, इसमें और बाकी ऑप्शन में क्या डिफरेंस था? That it is that the I mean that the सी, पहले इस तरह से आ रहा था. ओके, पहले ये सारा टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा था एंड अब ये कैसे आ रहा है? नाउ टेल मी. now it's like there it is like some like it the picture is in between and there are two like two लाइन्स आर ऑन द टॉप एंड द बॉटम ओनली. up and the bottom only. यस, लेकिन जब पहले ये था तो पहले क्या हो रहा था कि इसके साइड्स पे भी आ रहा था टेक्स्ट, राइट? बस अब Yes, साइड्स पे नहीं आ रहा, अब ये ओनली ऊपर एंड नीचे आ रहा है. सो वी कैन डू दैट एज वेल. यहाँ पर एक और ऑप्शन है, दिस वन. अब क्या डिफरेंस है मर्तज़ा? आयत, कैन यू टेल मी? that the picture is kind of like transparent. टेक्स्ट इज ऑन द पिक्चर. सी, अब टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के ऊपर आ रहा है, राइट? अब टेक्स्ट मूव नहीं हो रहा, अब पिक्चर के ऊपर आ रहा है टेक्स्ट. कैन यू सी इट? यस मर्तज़ा. Yes, तो अब जो भी टेक्स्ट है ना वो पिक्चर के ऊपर आ रहा है. अब अगर मैं इसका लास्ट वाला ऑप्शन पे देती हूँ, तो अब आया, अब क्या डिफरेंस है, कैन यू टेल मी? यहाँ पर अब क्या हो रहा है, टेक्स्ट पीछे आ गया. that the picture यस that the picture is now यस यस, एट द पिक्चर. यस मर्तज़ा. the picture is now on the text. On the text. So ये different positions है that we can use to customize the picture. Okay, तो हम इसकी position इस तरह set कर सकते हैं. So we normally choose the first one. और अगर मैं ये वाला लेती ना, ये first वाला option, तो ये क्या करता है, ये text के ऊपर image को आने ही नहीं देता, ये बस side पे रह जाता. So we normally use this first one ताकि हम picture को बड़ा भी कर सकें और इसको move भी कर सकें. Okay, now I can take this picture on the top. यहाँ पर मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया इमेज को. Okay, so now you can see that the cover page has an image here. Alright, so this is how basically you can customize a picture. Now यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स का. If you see it, this one. If I click on this online pictures option, तो अब ये क्या करेगा, अब ये जो इमेजेस मैं पहले अपने लैपटॉप से ला रही थी ना, तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकती हूँ. सो फॉर एग्जांपल, आई वांट बलून्स. Okay, so see, now it brings me balloon pictures. So I can search this. It's like Google. Okay, तो ये Google टाइप का है. यहाँ पर सारे balloons की picture आ गए हैं. I can just click on any. I can insert. First, I will have to click insert. It's going to download that file, and it's going to bring it in the Word for me. Okay, then यहाँ पर भी वही option आ रहा है position का. तो I can just take any position, and then I can move the picture. I can decrease the size. Okay, now there is one more thing that we can do with this picture. यहाँ पर if I double click on this picture ना, मैं इसको 2 times picture को click करती हूँ,
तो सी इसने मुझे यहाँ पर ऊपर ना डिफरेंट ऑप्शंस देना शुरू कर दिया. सो इफ़ आई गो ऑन दिस, लेट्स जस्ट से कि मैं कोई और एक इमेज देती हूँ पहले. लेट्स से कि मैंने आई गो इन ऑनलाइन पिक्चर्स एंड आई सर्च हार्ट्स. ओके, एंड मैंने जो है इसके अंदर आई टेक फॉर एग्जांपल दिस हार्ट पिक्चर. I click on insert. Murtaza, you're listening, right? Yes. Yeah. Now I can change the thing over here and I put it in between. Okay. Now if you see, is heart ka background color white है. Okay. So now I want this background to remove. तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी हार्ट पे. Okay. I click double click on this image. यहाँ पर remove background का option can you see? This one on the top. If I click on it, तो अब ये जो है अब इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया. वी विल प्रेस दिस कीप चेंजेस ऑप्शन जो यहाँ टिक बना हुआ है एंड नाउ इट हैजंट रिमूव्ड द बैकग्राउंड. वेट, मैंने इसको ये किया एंड वी कैन मार्क एरियाज टू रिमूव या मार्क एरियाज टू कीप. तो मैं फॉर एग्जाम्पल मार्क एरियाज टू रिमूव कर देती हूँ. सो आई कैन जस्ट ड्रॉ अराउंड दिस हार्ट के मुझे ये जो है ना एरियाज इसके रिमूव करना, मतलब इसका ये बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना. सो फॉर एग्जांपल आई डू दिस. ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा क्योंकि अब अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए. सो वी डोंट रियली नीड टू यूज़ दिस बट वी कैन ऑल्सो ट्राई दिस. ओके, मार्क एरियाज टू कीप किया, कीप चेंजेस किया. सो या इट्स नॉट रिमूविंग इट लाइक दैट. डिलीट मार्क. ओके, ये इतना ज़्यादा ख़ास यहाँ वर्क नहीं कर रहा बट अगर बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है सो वी कैन डू इट विद अन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एज वेल. ओके, तो रिमूव बैकग्राउंड वी कैन लीव. यहाँ एक ऑप्शन है करेक्शंस का. इफ़ आई क्लिक ऑन दिस करेक्शंस ऑप्शन तो यहाँ पर जो है हम डिफरेंट इसके ऊपर वो लगा सकते हैं फ़िल्टर्स. लेट मी टेक द फर्स्ट इमेज जो मैंने बलून वाली इमेज ली थी पहले. ओवर हियर. ओके, now I double click on it. यहाँ मैं corrections के option में गई. Now I can apply different kind of filters on this. If you see, okay. तो अब ये image को अगर मुझे edit करना है ना तो यहाँ से इसने छोटा सा image editing का भी option दे दिया है तो मैं इसको यहाँ से use भी कर सकती हूँ. Murtaza, do you understand this? Yes. Yeah, so we can also edit the picture from here. Okay, Ayat? Now, यहाँ पर एक ऑप्शन है कलर का. ये हमें डिफरेंट फिल्टर्स दे रहा है. आई कैन चूज अ फिल्टर फ्रॉम हियर फॉर द कलर्स लाइक दिस. ओके, देन हमारे पास एक आर्टिस्टिक इफेक्ट्स का ऑप्शन है. इफ आई गो हियर तो यहाँ पर से मुझे डिफरेंट इफेक्ट्स दिए हुए हैं. आई कैन यूज दोज इफेक्ट्स. ओके, सो वी कैन ऑल्सो कस्टमाइज इट विद दैट. एंड देन यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर वगैरह के ऑप्शन इट डजंट रियली वी डोंट रियली यूज दीज क्योंकि इतना खास वर्क नहीं करता. देन वी सी ऑल दीज फ्रेम्स. मैं इसको सर्कल फ्रेम में भी डाल सकती हूँ इस इमेज को. मैं इसको स्क्वायर फ्रेम में भी ऐड कर सकती हूँ. वी कैन हैव अ रिफ्लेक्शन फ्रेम, अ मिरर फ्रेम विद अ शैडो, एनीथिंग. ओके, सो इस तरह के इफेक्ट्स जो ना हम अपनी ये पिक्चर के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, पिक्चर की बॉर्डर अगर मुझे चेंज करनी है आई कैन चूज अ येलो कलर फॉर एग्जांपल. उसी इसने येलो कलर की बॉर्डर दे दिया. पिक्चर के अंदर कोई इफेक्ट्स डालना है, रिफ्लेक्शन है, सो ये मिरर टाइप का इफेक्ट हो जाएगा. देन पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर मुझे ग्लो का कोई ऑप्शन है तो ये ग्लो करना शुरू हो जाएगा. ओके, सो वी कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस लाइक दिस. देन पोजीशन का ये वाला जो ऑप्शन है ये भी वही काम कर रहा है जो इमेज की साइड पे जो ये वाला ऑप्शन कर रहा था. सो दे आर द सेम एंड बाकी इतने खास ऑप्शन नहीं. यहाँ क्रॉप का एक ऑप्शन है. वी कैन क्लिक ऑन दिस and we can crop the image. For example, I just want this part and I can press enter. So now it has cropped the image like this. Okay. Any question on this, Murtaza? No. Ayat? No. Okay. And Janet? Janet, any Yes. questions? No. Okay. Alright. So let's move on. इंसर्ट के टैब में हमारा पिक्चर्स हो गया. शेप्स भी अब काइंड ऑफ सिमिलर ही है. इफ आई क्लिक ऑन द शेप्स ऑप्शन अब इससे मुझे डिफरेंट शेप्स यहाँ दिए हुए हैं. लेट्स जस्ट से आई टेक दिस वन. आई हैव टू ड्रॉ द शेप. ओके,
and then I'll have to, if I want to color it, to see से मुझे इतने सारे ऊपर options दिए हुए हैं. So I can go ahead, pick any color for the shape. यहाँ पे shape fill option है, I can change it, change the color. Shape outline है, I can change the color of that. Okay. Shape effects है, again जैसे मैंने effects पहले लगाए थे, shadow या reflection effect मुझे चाहिए. Okay, तो इस तरह से इसका effect आ सकता है, या फिर मुझे यहाँ 3D rotation का कोई effect चाहिए. So I can have it like this. Alright. So we can put any effects on our shape. Then यहाँ पर again यहाँ पर एक position का option है जो ये वाला था पहले हमारे पास आया था. We can choose that and we can choose any of these options. Alright, any questions, Martaza? No. Ayat and Janat? Okay. Alright, so this was it for our pictures and shapes. Wait, can you show it again? Your screen was really glitching, actually. We just tried the shapes option, Janat. We can draw any shape if you want. And then we have the same options as the pictures before. Alright. Then inside के अंदर we have this table option. Now, after this table options, I will give you some assignments to do. So you will have to complete those assignments. Now what I will do, Ayat, look at the screen. Going in this table, okay, I'll click on the table. अब यहाँ पर ये different kinds of boxes बने हुए हैं. Martaza, do you know what a row and what a column is? I can't remember. You don't remember? Okay. So what basically a row and a column is? Let me just do this. Rows जो होती हैं वो हमारी horizontal होती हैं, मतलब जो straight line होती है. Like, let me take a shape and tell you. This is our row, okay? And then our column is this. ये column है. Do you understand now? Rows are a straight line, column जो है वो up and down है. Rows left to Yes. right, column up and down, remember? Okay, so ये rows ये columns इसको हमें अपने mind में रखना है, okay? Because table के अंदर ज़्यादातर rows and columns यूज होती हैं. आयत समझ आया rows क्या होती हैं? Rows and columns. Now we go in the insert option. यहाँ table का option है. If I click on that, let me just go a little down ताकि यहाँ पर I can make the table. Yes. Now I'm going to go on the table. अब यहाँ पर different boxes आ रहे हैं, okay? अब अगर मैं straight line ले रही हूँ तो ये मेरे क्या है? ये मेरी rows है या ये column है? Up and down अगर मैं ले रही हूँ. Yes, Martaza? Rows, No, up and down. columns. Yes. और अगर मैं यूं जा रही हूँ तो ये मेरी rows है, okay? Now अब यहाँ पर है ना I can go ahead and select कि मुझे कितने boxes वाला table चाहिए. So for example मुझे लिखना है name और मुझे लिखनी है age. So what I will do, मुझे मतलब 2 columns चाहिए होंगे. So I take 2 columns and मुझे मेरे पास students 3 हैं तो मैंने यहाँ पर 3 columns बना दिया. Okay, 2 rows and we make 2 rows and 3 columns. Wait. Yeah, we make our 3 rows and 2 columns. Understood? ये हम यहाँ पर इस तरह से select करके बनाएंगे. So I have taken these. Enter. ये मेरे 2 columns हो गए. 1 column, ये मेरा 2 column और ये मेरी जो है ये straight जो है ये मेरी rows है. Now I can write the name of Ayat, Martaza, Jannat. And now I can write their ages as well. Ayat 7, Martaza 9, Jannat 11. Okay. Martaza got it? How to make a table? Yes. Now, अब यहाँ पर जो है ना इस टाइप का हमारे टेबल के यहाँ पर राइट साइड पर बॉटम पर इस तरह का एक ऑप्शन आ रहा है, जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है ना छोटा सा. कैन यू सी इट? Yes. Yeah. Now what we will do, we will drag it down. अगर हम इसको डाउन ड्रैग करेंगे ना तो इसको ये बिग बना देगा. गुड आयत. ओके, तो ये इसको जो है इसकी हाइट इसको बिगर कर देगा. ऑलराइट, एंड वी कैन ऑल्सो मूव द टेबल ये वाले ऑप्शन से. टॉप लेफ्ट पर इस टाइप का ऑप्शन है,
इसको अगर मैं यूं ड्रैग करूंगी तो ये टेबल को मूव कर देगा। ऑलराइट, सो वी कैन यूज दीज बोथ। और अगर मैं अब ऊपर लुक करती हूँ तो यहाँ ऊपर से इट हैज़ गिवन मी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल फॉर माई टेबल, so I can choose any of these style as well. So see, it's changing my color of the borders, so I can use these styles if I want. Like for example, I use this or this one. So मैं ये colors यहाँ से choose भी कर सकती हूँ if I want for my column to look like anything. या फिर मैं इसको नॉर्मल भी ले सकती हूँ, फर्स्ट वाला। यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन है, ये कैसे यूज़ करता है, मैंने ये आयत का कॉलम से लेकर इसको सेलेक्ट इस तरह किया मैंने, जो जैसे नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं ना, मैंने आप तीनों को सेलेक्ट किया, शेडिंग में गए और मैंने इसका कलर जो है ग्रीन कर दिया। सो वी कैन यूज़ दिस शेडिंग फॉर द कलर ऑफ दिस। एंड अगर मुझे इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर ये जो ब्लैक लाइन्स बनी हुई हैं, इसको कलर करना है, सो देन अगेन आई विल सेलेक्ट एंड वेट। अच्छा, फॉर एग्जांपल कभी आप कोई काम कर रहे हो और ऊपर से जो टेबल्स के अभी मेरे पास ऑप्शन आ रहे थे वो सारे यू कैन सी हट गए, जो मेरे पास कलर और सारे ऑप्शंस आए थे टेबल के। सो डोंट पैनिक, यहाँ ऊपर लेआउट का ऑप्शन यू कैन सी डिज़ाइन के बाद दिस वन। ओके, सो इफ़ यू क्लिक ऑन दैट तो ये जो है नो डिज़ाइन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो ये टेबल वाले ऑप्शन वापस आ जाएंगे। नाउ यू कैन गो इन बॉर्डर स्टाइल्स, और मैंने इसकी ब्लैक बॉर्डर ले ली और इसने मेरे यहाँ पर माउस पे एक ब्रश दे दिया। I can use this brush and I can create the borders now. See, I can draw the borders like this. मैं इनके middle में भी एक border create कर सकती हूँ if I want to. Right now it won't work, लेकिन I will show you how we can create a border in the middle. Alright, uh, and then मुझे brush हटाना है, I'll again click over here. Any questions in this, Murtaza? No. Ayat? No, miss. ओके, सो दिस इज़ हाउ बेसिकली यू क्रिएट अ टेबल। अच्छा, अब मैं अगर किसी भी ये जो लाइन है ना मेरे पास, ये मिडल वाली, अब मैं अगर उस पर माउस रख रही हूँ, सो यू कैन सी कि मेरा जो माउस है वो चेंज हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। व्हाट दिस डज, मैं इसको ड्रैग करके जो है ना इस कॉलम को छोटा कर सकती हूँ, लाइक दिस। सीइंग इट, मर्तज़ा? Yes. We can increase or decrease the width of the line like this. ओके, और यहाँ पर जो है अगर मैं इसके माउस यहाँ मिडल में रखती हूँ, यहाँ पर टॉप पे लेके जा रही हूँ, तो ये मुझे एक प्लस का ऑप्शन दे रहा था। आई कैन क्रिएट अनदर कॉलम लाइक दिस। आई कैन इंक्रीज द कॉलम्स एंड देन जितने भी मेरे पास कॉलम्स हैं, आई कैन हैव मोर ऑफ दिस कॉलम्स। वेट, अगर मुझे इसमें एक और लाइन चाहिए ना, मतलब मुझे एक और कॉलम बनाना है, तो उसके लिए आई कैन गो अहेड, यहाँ पर माउस रखूँगी तो मुझे इस तरह का प्लस का ऑप्शन देगा। आई कैन क्लिक ऑन दैट प्लस एंड ये मेरे लिए एक और कॉलम इसने बना दिया। मेरे पास 3 कॉलम्स हो गए। तो अब मैं जो है इनको, जैसे आयत का फुल नेम मैंने लिख दिया, आयत रहीम मर्तज़ा अली जन्नत रहीम। ओके, सो लाइक दिस आई कैन क्रिएट मोर कॉलम्स लाइक दिस। ओके मर्तज़ा, कोई कंफ्यूजन है सो आस्क मी, यू हैव एनी कंफ्यूजन? No. पक्का? Yes. Okay, so this is how you can create a table. If you go again in the insert and the table option, तो यहाँ पर you saw कि हमने किस तरह ये table हमने create किया है. Okay, so now what we have to do, I will give you an assignment now to create something with the table. Can you see my screen? Yes. Can you create this? अच्छा, ये जो ऊपर मर्तज़ा ये जो लिखा हुआ है ना लोगो, और ये जो 2 ब्लू और ब्लैक कलर बने हुए, वी डोंट हैव टू मेक दिस। ओके, हमें स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड लिखना है, ये सब लिखना है, एंड देन हमें ये फर्स्ट वाला टेबल बनाना है, जस्ट दिस। ओके, कैन यू मेक इट? Yes. ओके, go ahead, create this, and when you're done let me know. Okay, and if you have any We have to do this in class. yeah, you have to do this in class, and if you have any questions let me know. Go ahead.
Miss, Yes. um, in this picture, uh, Mm-hmm. what is the in this picture? What is this written from the T in the second line? The second line This term, term. term. Yeah, term. First term and second term होता है ना? That. Then Okay, Janet. Murtaza, what about you? Miss, I'm making the table. Okay, do it quickly so we can go on the next one, okay? Miss, I'm done. Okay. Those who are done, kindly save it. And Murtaza, do it a little quick so we can move on to the next one.
Murtaza, when you're done, let me know, okay? Murtaza, are you done? Yes, Murtaza? Mm-mm. 1 minute, miss. Okay. Murtaza, are you done? Yes, yes, done. Done? Okay. Yes, that's done. Okay, would you like to share your screen? Mm. No, miss. I can I send it in the group later? Uh, okay, that's fine. Okay.
Yeah, if you haven't finished it yet, it's fine. We can do it also after the class, okay? But do you have any questions in it? No, no, I have understood it. You've understood it ना? So अगर कोई questions है ना तो आप मुझसे बाद में पूछ लेना या अभी भी पूछ सकते हो and then also then do send me in the group. Do not forget, okay? So that I can check Yes. it and I can let you know what you have to fix. All right. Uh, okay. So this was our table. We learned how to make a table. Now let's get on to our smart art. Okay. In the insert, you can see this option smart art. Okay. Can you see it? This one. या Yes. ओके यू क्लिक ऑन इट तो यहाँ पर अब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है ग्राफ्स एंड आर्ट्स हमें डिफरेंट दिए हुए हैं तो हमने स्कूल में हैव यू मेड एनी वेन डायग्राम्स जिसमें हम बबल बनाते हैं ना हम उसमें एरोज बनाते हैं Yes. या फिर लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई है लाइफ साइकिल हमने किसी चीज़ की पढ़ी हो राइट Yes. सो उसके जो ग्राफ्स उसके जो ये चार्ट्स आता है ना वी कैन गेट इट फ्रॉम ओवर हियर वेट सो यहाँ लिस्ट है वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट ओवर हियर ओके यहाँ प्रोसेस है यहाँ डिफरेंट प्रोसेसेस है इफ यू वांट एनी प्रोसेस ओके यहाँ लाइफ साइकिल्स है हमें किसी चीज़ की लाइफ साइकिल बनानी है हायरार्की है रिलेशनशिप्स है मैट्रिक्स पिरामिड जो हम फूड पिरामिड बनाए कभी मर्तज़ा Yes. You have made a food pyramid before? No. No? Okay, लेकिन अगर कोई pyramid बनाना so we can get it in pictures. Okay, Ayat, now look on the screen. Ayat, can you see these? Have you ever made a life cycle before? So, for example, if I click on this one and I press OK, तो ये यहाँ पर ना मेरे पास एक डायग्राम बना के दे रहा है आयत ओके देन अब मैं यहाँ पर जो है ना लिख सकती हूँ लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू show you the steps of turning on a computer. The first you turn on the button, okay, then you sign in, then you put the password, then you जो है open the app, whatever you want to open the app, okay, and then you start working. So you just have to go ahead and type whatever you want. ये आपको पूरा बना बनाया दे देगा. Okay, अब यहाँ ऊपर if you see ना तो different design दी हुई है. I can make it 3D. I can make it like this. I can make it metallic. I can make it like this 3D. मुझे इसका ये change करना है जैसे ये लिखा हुआ है. See जो मैंने लिखा था वो already still लिखा हुआ है. Okay, I can increase the size of it. इसमें भी इसने मुझे position का option दिया हुआ जो मेरे पास picture में आ रहा था. Okay, or change colors if I want multicolors. I can have multicolors. Got it, Murtaza? Do you see what's happening here? Yes. Is it simple? Is it easy? Yes. Okay, let's make another one. If I go in insert and I go in the smart art, I can make for example a hierarchy. तो यहाँ पर different kinds of ये आ रहा है. I can just type anything I want. जैसे computer मैंने लिखा. Okay, computer के अंदर monitor होता है. अब monitor या फिर let me just I can right click and delete this box as well. So I'm going to just click on it, okay, and I press delete. तो वो वाला देखो ऑप्शन चला गया. Now see आयत कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हम कंप्यूटर के अंदर क्या क्या पार्ट्स यूज़ करते हैं कैन Murtaza and आयत can you both tell me? Is there a mouse Yes. and Yes. Keyboard. keyboard and आयत Screen. monitor screen, okay? Yeah. और अगर मुझे ऐसे और भी चाहिए so I can get more of these. I can right click and I can यहाँ पर एक ऑप्शन आता है add shape. Can you see this add shape? So इसने देखो मुझे एक और shape दे दिया. So monitor के अंदर क्या होते हैं हमारे पास apps होती हैं. So I can type apps and whatever I have. Okay.
So this is how you make it. Now I have a task for both of you. Look on the screen. If you see, this is basically a food pyramid. Ayat, can you see on the screen? Murtaza, you haven't made this ever before? No, No? I've never made this. Oh, you haven't made it? Okay. ये एक फूड pyramid होता है जिसमें different kinds of जो है ना food add कर सकते हैं कि healthy food कौन सा होता है और unhealthy कौन सा होता है. So wait, this one is clear. Can you see it now? This one. तो सी इसने यहाँ पर ये फर्स्ट पे स्वीट्स डाल दी जो हमें नहीं खाना चाहिए वो सबसे छोटे pyramid में आता है जो हमें खानी चाहिए चीज़ें वो सबसे बड़े में आता है. ओके तो इस टाइप का food pyramid है. Now Ayat and Murtaza, what I want you guys to do, I want you guys to make this food pyramid inside the word using the smart art option. Can you do it now? Yes. Okay. I am giving you 5 minutes to do it. Okay. Go do it fast. Ayat, create it.
Miss, I'm done. Okay, and Murtaza, what about you? Yes, Murtaza? 1 minute, miss. Done. Okay, Murtaza, can you show me? Can you share your screen? Miss, nice. Send it all on the group, please. Why can you not share me right now? I want to see so that I can tell you if you have done anything wrong. Actually, my triangle isn't. I mean, it's not going well at all. What? It's Actually, you're having problem in screen sharing? actually Mm-hmm. I'm not able to do it. At first it was going good. I'll share my screen and show you what it all turned Yes. into. Okay, okay, it's fine. So you have a problem in sharing now. So okay. When you're done, just share with me on the group. Okay, try to do that so that I No, can tell you. I'll Hmm? share both of. I'll share both of. Yes, Uh, yes. Okay, perfect. आप इसको save कर लो so that you don't lose it. Okay. 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 All right, Ayat. I will also send yours in the group. Other than that, I will. If you see on my screen right now, uh, we have done the insert tab till here. Kal we will finish all of these and then we will go to our design tab and we will be creating a certificate. Okay, Murtaza and Ayat? Okay. Alright, so tomorrow is Friday and then on Saturday, Sunday we have off. Okay? Alright, so I'm going to end the class right over here. Murtaza, do you have any questions? No. Ayat, do you have any questions? Yes or no? I have. Yeah. Bye, Miss. Okay. Teacher ever.